कि एक चैप्टर को जब तक आप 5 से 6 बार नहीं सुनते पढ़ते ना, तब तक वो दिमाग में भी नहीं घुसेगा। हाँ हाँ, दिमाग में तो बिना रिपीटेशन के नहीं बैठता। वो क्योंकि फ्लीटिंग थॉट की तरह आता जाता रहता है। तो ठीक है, थोड़ा हवा लगती है उसकी, थोड़ी देर असर रहता है। और दिमाग हाँ, में बैठाने के लिए तो 5-6 बार भी काफी नहीं है। बट मेरा तो ऐसे है कि मैं यही एक्सपीरियंस, यही एक मेड का मेरा पहले से चल ही रहा है ये टॉपिक। मेड का टॉपिक तो कब से चल रहा है, जब से हम लोग ने ये स्टार्ट किया तब से कितने सारे इंसिडेंट्स ऐसे आ गए मेड के लिए, ऐसा वैसा। अभी कल मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, उसकी कुछ तो फादर इन लॉ या तो कोई एक्सपायर हो गया है, तो जब तक विधि कंप्लीट नहीं होती तब तक वो नहीं आ सकती, बट ऑब्जेक्ट गाँव गई है। तो कल मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ बात कर रहे थे, और एक दो लोगों से बात हुई तो वो बोलते हैं कि क्या पता झूठ है सही है, दशहरा है इसके लिए चली गई है, ऐसा वैसा सब का। कल ही मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया कि ठीक है ना, अभी वो जगह पे हम लोग भी रहते बराबर, तो अपने में भी 12 दिन तक तो रिवाज रहता है, एज अ बहू को तो रिवाज है ही, और गांव में तो कितना स्ट्रिक्ट रहता है बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। कि तो फिर वो सब निपटा के ही आ सकते हैं ना। और ऐसा तो है नहीं आज गए कल वापस आ गए, तो उसको तो हम भी रहेंगे तो पूरा निपटा के आना पड़ेगा ना। हम्म। अभी झूठ है सच है वो उसके ऊपर है। हाँ, अभी परिस्थिति ये है कि वो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही अचानक से मेरे मुंह से निकल गया कि हो भी सकता है जो हो वो, बट उसकी जगह पे अपने को रखे और देखे तो बिल्कुल सही है। और गॉड ग्रेस हो भी रहा है काम, ऐसा तो है हाँ, ही नहीं एक कि। तेरे लिए वो एक अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिल गया। मैं वही सोच रही थी कि शायद इसके लिए ये सब हो रहा है कि मैं हम्म। इतना कर तो सकती हूँ तेरा कि नहीं। कॉन्फिडेंस वापस आया ना। यस यस। मतलब इतना किचन में खड़े रह के बर्तन करो, झाड़ू करो, पोछा करो, दैट हम्म। इज नॉट पॉसिबल ना। उस समय बहुत मुश्किल हो रही थी। हाँ। सोच ही नहीं सकती थी ऐसा करने का। और नाउ आई कैन डू एवरीथिंग। हाँ, कर बैठ के मतलब थोड़ी देर मैं रेस्ट लेती हूँ अपने आप वो से। ठीक है ना। नहीं, मैं अपने आप से लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा भी उसको खींच नहीं सकते ना, अच्छा हो हाँ, गया उसका मतलब ऐसा भी तो नहीं है कि नहीं उसके करना ऊपर। चाहिए, थकाने जैसा तो कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा कर लेती हूँ रिलैक्सेशन, और ये वो थोड़ा बैठ बैठ के ऐसे वैसे थोड़ा बैठ के करती हूँ थोड़ा ऐसा वैसा। बट अभी 5 दिन से नहीं है तो पहले जैसा नहीं था, इसको पकड़ के लेके आओ उसको पकड़ के लेके आओ हम्म। करवाओ ना। सो वेरी गुड, आई एम फीलिंग गुड। और एक बात शेयर करनी थी कि पहले मुझे ना वो राग और द्वेष का समझ में नहीं आ रहा था, मैंने आपसे शेयर किया था, तो अभी धीरे धीरे मुझे वो भी समझ में आने लगा है। वाह। द्वेष के लिए भी समझ में आने लगा है, राग को तो मुझे मतलब समझ में आ ही जाता था कि ये राग है। राग तो बट अभी पकड़ा जाता है। हाँ, पर द्वेष का भी अभी समझ में धीरे धीरे आने लगा है, पहले गुड गुड। बिल्कुल पता नहीं चलता था। हम्म। दुश्मनों सो को तो पहचानना ही चाहिए। राग यस द्वेष सबसे बड़े दुश्मन है। यस यस। सो मतलब ये सब इसकी वजह से होता है, सांख्य और गीता की वजह से, वो नॉलेज जितना आप उसको रिपीट करते रहते हो और अपने आप से उसको मतलब जोड़ने लगते हो ना, हाँ, तो एसोसिएशन बनता है। यस, देन इट विल कम्स, कभी ना कभी तो आता ही है पक्का। ये मैंने मतलब क्योंकि मैंने जब भी सोचा था कि मुझे राग समझ में आता है द्वेष नहीं आता है, तो वो मेरा क्वेश्चन मार्क जो था वो हाँ। अभी धीरे धीरे वो क्लियर होने लगा है कि चलो इसको भी ऐसे समझ सकते हैं। यस, प्रयत्न करने से आ ही जाता है। यस। और ये 12th चैप्टर तो मेरा फेवरेट है क्योंकि बिफोर मैरिज ना वो स्वाध्याय है ना, स्वाध्याय नहीं, पांडुरंग शास्त्री आठवले जो थे हम्म। उनका सब स्वाध्याय वगैरह हमारे गांव में होता रहता था। हम्म। तो उसमें ना एग्जाम्स रहते थे, वन अच्छा। लेवल 1 लेवल 2 ऐसे, कृतज्ञता ऐसा तो कुछ उसके बहुत सारे पार्ट थे। तो उसमें हम लोगों को जो एग्जाम देते थे ना उसमें गीता का चैप्टर नंबर 15 और 12 दोनों बाय हार्ट करना था, मतलब रीड करते थे हम लोग।
और उसके अंदर से वो लोग क्वेश्चन आंसर पूछते थे। वाह। यस, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का पेपर रहता था। उसमें मुझे 65 मार्क्स मिले थे वो टाइम पे। सो ये 12 नंबर का मेरा ना, मतलब 12th अध्याय का मेरा उस टाइम से कनेक्शन है। हाँ, अलग ही कनेक्शन हो जाता है फिर वो। यस। और उसकी वजह से संस्कृत भी रीडिंग बहुत अच्छी, आप मुझे उस दिन बोले ना, इसके लिए मैं हाँ, करना पड़ता है। उच्चारण वगैरह काफी अच्छा है। Yes, तो उसकी वजह से मेरा संस्कृत बहुत अच्छा हो गया था वो टाइम के लिए। नहीं, अभी भी करती रहेगी तो वापस हो जाएगा वो तो। सीखा हुआ हाँ। कहीं गायब नहीं होता है। वो यस थोड़े यस। परतों के नीचे दब गया है, वो आ जाता है। नहीं, बराबर है। सही है। तू पढ़ रही है? स्टार्ट करें। हाँ। चैप्टर 12, सगुण एंड निर्गुण भक्ति। 59। चैप्टर 1, चैप्टर 6 to 11, फ्रॉम वन पॉइंटेडनेस टू टोटालिटी। नंबर 1, brothers, the waters of the river Ganga are holy everywhere, but some places on her banks, like Haridwar, Kashi, Banaras, and Prayag, Allahabad, are considered particularly holy. They have blessed the whole world. The Gita too is holy from the beginning to the end. Still, some of its chapters have special holiness, like the places of pilgrims. The chapter on which I am going to talk today in one such chapter. The Lord Himself has described it as a nectar. ये तु धर्मा मृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते. This is a small chapter with only 20 verses, but it is as sweet and life-giving as a spring of nectar. The Lord has Himself acknowledged यूलाइज, her the greatness of यूलोजाइज, bhakti. अच्छा हाँ। यूलोजाइज्ड। Gorgeous. Number 2. In fact, the principle of bhakti has been introduced in the 6th chapter itself. The first 5 chapters deal with the science of life. They deal with karma in the form of performance of swadharma, vikarma, and mental sadhana, the inner complementary process which helps that karma, and the final state of a karma that results from their confluences and burns to assess all the karma. With this, the exposition of the science of life is complete. In one sense, it is the principle of bhakti that has been discussed thereafter from the 6th chapter to the 11th. The 6th chapter tells us how to have one pointedness of mind and discuss the means therefore and the need for it. The 11th chapter presents the complete and holistic vision. Let us now see how we can make the long journey from one pointedness to the vision. Beginning was made with one pointedness of mind. Once this is achieved, one becomes capable of pursuing any study. One pointedness of mind can be utilized for the study of any subject with good results. But such a study is not the highest goal of the concentration of mind. The study of mathematics, for example, does not fully test the concentration of mind. Concentration of mind can surely help in achieving proficiency in mathematics or any other branch of knowledge. But this is not its true test. Hence, it was recommended in the 7th chapter that we should concentrate our mind on the feet of the Lord. The 8th chapter exhorts us to try
continuously till the moment of death, to be at the feet of the Lord with all these sense organs devoted to Him and the whole being dedicated to His service. All our sense organs must be trained to serve this one purpose. वडिले वळण इंद्रिया सकळा भाव तो निराळा नाही दूजा. All the senses have become used to devotion. There is nothing else in the mind. This is what should happen. All the senses should be madly in love of the Lord. Those around us may be wailing or singing hymns. They may be absorbed in weaving webs of desires and passion, or one may be in the company of saintly persons. Whatever may be the condition, the senses should be trained by constant practice in such a way that the thought of the Lord would be in mind at the moment of death. This lesson of constancy has been given in the 8th chapter. To sum up, there is teaching of concentration of mind in the 6th chapter, that of prapatti or concentration, directed to the Lord in the 7th. Of the yoga of restless striving in the 8th, and that of the dedication to the Lord in the 9th chapter. The 10th chapter tells us how to proceed step by step to grasp gradually that the Lord is pervading the entire creation right from an end to the creator of all beings. The 11th chapter presents the complete and holistic vision. I call this vision on the cosmic form the yoga of totality. This vision essentially means realizing that the whole world is connected in a grain of sand. This is the complete and total vision. The element of bhakti has thus been examined from different angles from the 6th to the 11th chapter. कितना अच्छा समरी दिया ना. हाँ वही तो. अरे पहले भी दिया हुआ था उन्होंने. हाँ, नाइन्थ पहले आई वो थिंक सो. 9th चैप्टर के लिए था. हाँ, उससे 9th पहले चैप्टर. 6th चैप्टर जो शुरू हुआ उसके लिए भी 1 to 5 के लिए था. यस. ठीक है. सगुण मैं पढ़ती हूँ थोड़ा सा. चलेगा. 60th point, the Saguna and the Nirgun devotee. This discussion of bhakti is going to be completed in the 12th chapter. Arjun has asked a question here, which is similar to what he had asked in the 5th chapter, when the exposition of the science of life was concluded. He asks, some devotees worship you in Saguna form, while others worship you in Nirguna form. Whom do you like more? 4th para. What answer could the Lord give? It is just like asking a mother having 2 sons, whom do you love more? The younger son is a little child, deeply attached to his mother. He is happy only in her company and is restive if she is out of sight, even for a moment. He cannot bear separation from her. Without her, the world is like a big void for him. The elder son, too, is full of love for the mother, but he is grown up and mature. He can stay away from her. He serves her and takes all the burden and responsibility upon himself. Being absorbed in work, he can endure separation from her. He is admired by the world
and his reputation pleases his mother. If you tell his mother that she can have only one of these two sons and she will have to choose between them, that what could she do? How can she make a choice? Try to understand her plight. She will be totally nonplussed and may mumble, I can bear separation from the elder one if I cannot help it. It is more difficult for her to tear away the younger son from her bosoms. His special attachment to her will weigh her, and she may reply accordingly. But it cannot be said to be the real answer to the question as to which of the two sons is dearer to her. She will reply if she must, but it would not be proper to take her words literally. My God. कितना एम्फेटिकली बोला है कि ये क्वेश्चन ही गलत है. जबरदस्त. 5. The Lord has been put exactly in the same predicament. Arjuna asks the Lord, O Lord, one of the two devotees loves you madly. His mind is riveted on you. His eyes long to see you. His ears are eager to hear you, your praise. His hands yearn to serve and worship you. The other one is self-reliant. He has controlled his senses and is ever absorbed in working for the well-being of all, engaged in selfless service of the society day and night. He does not even seem to remember you. He has realized oneness with the entire creation. Out of these two, whom do you love more? The Lord has replied exactly like that mother. He says, I love the former, the Sagun Bhakta, and the latter too is mine. The Lord is clearly on the horns of dilemma. He has somehow given a reply just for the sake of replying. 6th para. The fact there is absolutely no difference between these two types of devotees. Both have equal merit. To compare the two is to transgress the limit of propriety. The question that Arjun had asked in the 5th chapter about karma has been asked here about bhakti. In the 5th chapter, it has been told that man attains the state of akarma with the help of karma and vikarma, and that the state of akarma appears in two forms. The yogi works ceaselessly but does nothing inwardly, while the sannyasi sets the world in motion without doing anything outwardly. How to compare these two states? How to compare the two halves of the same sphere? They are completely identical. For the two states of akarma, two different terms have been used, yoga and sannyasa, but they have the same meaning. The question of the choice between them has finally been clinched on the ground of relative easiness. 7. The question of choice between Saguna and Nirguna is similar. The Sagun devotee serves the Lord through his organs, whereas the Nirgun devotee thinks of the God of the whole world. The former appears absorbed in outward service, but his mind is absorbed in the contemplation of the Lord. The latter does not appear to be rendering any concrete service, but he is certainly rendering a good service, a great service from within. Which one of these two devotees is superior? These two types of devotees may appear outwardly different, but they are intrinsically one and the same. Both of them are dear to the Lord, but Saguna Bhakti is easier. The answer given here is similar to the one given in the 5th chapter. You do it now. I can't read anymore. Okay. Saguna is 61. Saguna is easy and safe. 8th para. In the yoga of Saguna Bhakti, all the organs can be directly employed. They could be either a help or a hindrance or both. Whether they save or destroy depends on the way we look
at them. Suppose a man's mother is on her deathbed and he wants to meet her, but there is a distance of 15 miles between them. There is no motorable road, only a narrow trail passes through a jungle. Now, in this situation, is the trail a means or a hindrance? The man may curse the ट्रेल trial and ट्रेल tra- नेचर ट्रेल्स trail, बोलते हैं ना, वो हाँ, पगडंडी, उसको बोलते हैं ट्रेल. trail, trail. The man, the man may curse the trail at every step and say, but for this trail, I would be at my mother's side this moment. For him, he trail is an enemy. He would walk on as he must, but he will stamp his feet all along with irritation. If he looks upon it has his enemy and sits down in disappear, his supposed enemy will conquer him. But if he walks fast, he will overcome it. Another man may say, the jungle separates me from my mother. But thank God, at least this narrow trail is there. It will take me to my mother. Otherwise, how could I have crossed this wilderness? विल्डरनेस. Wilderness. He would consider the trail as a means and walk swiftly along it. He would regard it as a friend and would have gratitude for it. It does not matter what you think of the road. There is no alternative to walking on. It is your attitude and outlook which will decide whether the road is a means or a hindrance. This is true about all our organs. ये हम लोग ने ना इसमें प्रतिपक्ष भाव में सीखा. मतलब नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा, चलो इतना तो हुआ, इतना तो कर. हाँ. बिल्कुल, मैं भी वो याद कर रही थी, मैंने कहा दिस इज व्हाट वी ऑल गो थ्रू. यस यस. मतलब ईसीटी में भी काम आता है ना कि भाई पहले समझ में नहीं आता था, अभी समझ में तो आ रहा है. कम से वो कम बहुत मन बड़ी तो है. बात है. यस. पहचानने को आया, वो ही बहुत बड़ी बात है ना. या अभी भी जो चल रहा है ना कोर्स. हाँ. वन लेडी शी सेड अनदर वन इज रिपीटिंग. तो वो जो रिपीट कर रही है उसको बोलती है कि तेरे को ये सब कैसे सूझता है, मेरे को ये सब बोलने को नहीं आता है अपने आप. तो बोलती है करते करते आएगा. एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट बनाने को पॉइंट नहीं मिलता है ना. इजी नहीं है. नहीं, सच्ची में वेरी. For the Saguna devotee, they are the means to realize the Lord. They are like flowers that are to be offered to the Lord. With his eyes, he beholds his form. With his ears, he listens to his praise and his identifying stories. With his mouth, he chants his name. He uses his legs for pilgrim and hands to render service. In this way, he dedicates all the organs of perception and action to the Lord. For him, they are no longer the means for enjoyment. पूरा सांख्य The आ गया. flower, हाँ, the flowers are there to be offered to the Lord. वो था ना मेरे हाथ, वो गाना हम लोग सुन रहे थे, देखो हाँ. इनका किसी का तो था. या वो कौन थे, कोई तो थे ना. वो हाथ वो जो दर्शन किया करे. जगजीत सिंह के ये भजन है मुख जगजीत. वो जो राम का भजन किया करे, है आंख जो भगवान का दर्शन किया करे, ऐसा ही कुछ है. हाँ वही है, बट जगजीत सिंह नहीं है, और कोई है. और कोई है? अच्छा. उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो सिर्फ भक्ति के सॉन्ग ही गाते. ओके. हाँ, और तो और कोई है, अनूप जलोटा. हाँ, अनूप जलोटा, सॉरी, राइट 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 राइट, अनूप जलोटा. हाँ, मेरे को अनूप. जगजीत सिंह पता नहीं कैसे नाम आया. बराबर, अनूप अनूप जलोटा.
ये भी सडनली याद आ गया। जो शाम का दर्शन किया करे, ऐसे है उसका। धुन भी याद आ गई, अब नाम सही याद आया तो। हाँ, कोई। The flowers are there to be offered to the Lord. One should not put garlands around one's own neck. Likewise, the organ should be used in the service of the Lord. This is the outlook of the Saguna devotee. But to a Nirguna devotee, they appear to be a hindrance. He restrains them, starves them, keeps a watch over them. The Saguna devotee feels no need to do so. He surrenders them at the feet of the Lord. Both these are methods of controlling the organs. Whatever be the way, it is imperative to restrain them and prevent them from वैलोइंग, walling, वैलोइंग यानी wallowing डूबना। in the pleasures of the senses, but वैलोइंग, सॉरी, हाँ, one वैलोइंग यानी डूब जाना जैसे। in the pleasures of the senses, but one way is easier while the other one is difficult. Para number 10. Nirguna devotee is dedicated to the good of all. This is no ordinary thing. It is easier said than done. One who is absorbed in thinking about the good of the whole world can do nothing else. Hence, Nirguna sadhana is difficult. Saguna worship, on the other hand, can be done by anybody according to his capacity. To serve the small village we are born in or to look after our parents is a form of Saguna worship. Such service should, of course, not go against the interest of the world. No matter how small your service is, it will have the character of bhakti if it does not go against the good of others. Otherwise, it will be a sort of attachment. The Shaguna worship consistent consists consists of serving the parents, the friends, the distressed people, and the saints, considering them as forms of the Lord, and is contained therein. It is easy. Hence, although both Saguna and Nirguna Bhakti are essentially the same, Saguna is preferable on the ground of relative essence, is easiness. Para number 11. Apart from the point of easiness, there is one more point. Nirguna worship is for all known jnana. But Saguna is full of love and tenderness and the warmth of feeling. A devotee is more secure therein. There was a time when I relied much on knowledge, but experience has taught me that knowledge alone is not enough. It does burn down gross impurities in the mind, but is powerless to wash away subtler impurities. Self-reliance, inquiry into the nature of the self, discrimination between the self and the not self, abhyasa, constant practice, vairagya, detachment and dispassion. All these means taken together are of little avail here. The subtle impurities can be washed away only by the water of bhakti. इसीलिए इमोशनल मैनेजमेंट से ही योग शुरू होता है। अच्छा, बहुत जरूरी है। इमोशंस को ठीक से डायरेक्ट कर दिया जाए तो वही भक्ति आसानी से बन जाता है।
ज्ञान से उधर तक पहुंचना, ज्ञान के बाद में भी भक्ति होए बिना तो ज्ञान भी फल नहीं देता ना. बराबर है. भक्ति इज इनहेरेंट इन दैट ज्ञान, तो ही वो ज्ञान ज्ञान है. और यदि वो नहीं है तो वो फिर अज्ञानी है, अविद्या है. मतलब भक्ति जो शब्द है ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हिडन वर्ड्स छुपे हुए, जैसे कि काइंडनेस, सरेंडरनेस, डिस अटैचमेंट के ऑपोजिट को क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट. समझ में आ रहा है? ये भक्ति वर्ड एक है, बट जो इसमें जिस जो सब कुछ दिया है वो उसके अंदर आ जाता है. इतनी सारी शाखाएं हैं उसकी. हाँ. मतलब कोई भी भक्त ले लो आप, उसको मतलब कुछ जरूरत ही नहीं रहती है ना. क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं. ऐसे बहुत सारे जैसे नरसिंह मेहता है, ज्ञानदेव है, वो सब भक्ति ही है. तो वो एज ए योगी ऐसा. हम्म. तो भक्ति ये सब लेके आती है. लेकिन ये मेरे को बात बहुत अच्छी लग रही है कि ज्ञान से तुम मोटा मोटा तो कर लोगे, बारीक वाले के लिए भक्ति सटल. ही चाहिए. और मैं भी वही सटल. बोलती हूँ, वीसीटी, तुम मोटा मोटा तो सारा योग फॉलो कर लेते हो, लेकिन वो जो बारीक कंकड़ जो है, जिससे बार बार उसके ऊपर पैर पड़ता है, फिसलते रहते हो, गिरते रहते हो, वो साफ करने के लिए योग में यस. भी वृत्ति चेंजिंग टेक्निक चाहिए. नहीं. अभी मेरा मन पर कर रहा है वृत्ति चूजिंग टेक्निक बना दो उसको. सही है. Only bhakti has the efficiency to do it. You may call it dependence, but it is dependence on nobody else but the Lord. The mind cannot be completely cleansed without His His help. help. Para number 12. Some may say you are giving a narrow meaning to the word knowledge. Jnana. To hold the knowledge cannot cleanse the mind completely. It is to undervalue it. This is certainly a valid objection, but my point is that it is hard to attain pure knowledge while encased in the Mortal body. Wow. What a body. potent statement. नहीं समझा मुझे. इस शरीर के अंदर रहते हुए पूरा प्योर नॉलेज अटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शरीर में इम्प्यूरिटीज है, और शरीर बिना इम्प्यूरिटीज के हो ही नहीं सकता. माइंड जिससे तुम नॉलेज गेन करोगे वो भी त्रिगुणात्मक है, तो उसमें तमस रजस नहीं हुआ तो माइंड काम ही नहीं कर सकता, तो तुम नॉलेज कैसे प्योर गेन कर सकते हो. कितनी समझा. गहरी बात बोल दी. हम्म. The knowledge that we can have while we are in this body is bound to be somewhat imperfect and incomplete. Its power is bound to be limited. Pure knowledge will undoubtedly burn to assess all the impurities in the mind, and along with it, it will burn down the mind but itself. But when associated with the weak flesh, its power proves to be inadequate. Inadequate. It cannot therefore wash away subtle impurities. One has to take recourse to bhakti for this purpose. A man is therefore more secure in bhakti. This is my personal assessment. Saguna bhakti is easier as there is reliance on the Lord, whereas in nirguna bhakti there is self-reliance. But after all, what does self in its self-reliance mean? It means reliance on the Lord that dwells within us. You cannot find anybody purified solely Solely यानी through only. solely through reason. Through self-reliance, that is through knowledge of the self within.
we shall have pure knowledge. Thus, even in the self-reliance of the Nirguna Bhakti, reliance is on the self. बार 62. अपने योग How सूत्र में भी धर्म मेघ यज्ञ धर्म धर्म मेघ समाधि का स्टेज है जहां तक योगी प्रयत्न से पहुंच सकता है, लेकिन धर्म मेघ समाधि के आगे वो अपने आप नहीं जा सकता, अपनी कोशिश से नहीं जा सकता. अच्छा. From there to go to Kaivalya, there has to be moksha. तो मैंने कहा तुम चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चढ़ते जाओ चाहे जहां तक चलते जाओ. तो ये सीधा सीधा तो तुम कर सकते हो, यानी तुम्हारा काम माइनस का ही है. जब तक ऊपर से आके ग्रेस नहीं होएगा तब तक पॉजिटिव एक्शन नहीं होएगा. हाँ, सही. ऊपर वाले की दया बहुत जरूरी है और वो भक्ति से ही आएगी. हालांकि वो तो हर समय बरस रही है, लेकिन हमारा रिसेप्टिविटी तब होगा जब हमें भक्ति होगी, तो हमारे को रिसीव होगा. Yes. Sure. Without Nirguna, Saguna is defective. I mention easiness and security as 2 plus points of Saguna worship. I can mention a few plus points of Nirguna worship also. In Nirguna, one remains within limits. To take an example, we establish institutions to undertake various kind of service. Intently यानी शुरू में initially an individual established an institution. He is its main pillar. Everything revolves around him. But as the institution grows, it should not remain depend on a single individual. It should then be guided by principles. Otherwise, decline is bound to set in soon after the department of that individual. To take my favorite illustration, one cannot continue spinning when the belt of the spinning wheel snaps, nor can then one wind up the yarn already spun. This is what happens to the institution when it lost to the key person. It, as it were, become orphaned or orphaned. This would not happen in the institution advanced from devotedness to the individual to devotion to principles. 14 para. Saguna needs help from Nirguna. One must eventually learn to free oneself from attachment to and preoccupation with individuals and outer forms. The Ganga emerges from the Himalaya, from the locks of Lord Shiva, but she does not linger there. Leaving that support behind, she flows through the hills and the forests to the plains, and thus benefits the people. In the same way, an institution should be ready for adopt principles as its mainstay in the eventually of losing the support of the key individual. While constructing an arch, support is given to it, but the support has to be withdrawn later. If the arch remains firmly in place after the support is removed, the support can be said to have done its work. Saguna is indeed the source of inspiration, but the ultimate culmination must be in Nirguna, in commitment to principles. Self-knowledge must ultimately emerge from the womb of devotion.
The plant of bhakti must blossom into the flower of self knowledge. इतना अच्छे से बता दिया कि निर्गुण के बिना सगुण नहीं है, सगुण के बिना निर्गुण नहीं है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सही है। वो बताया ना उन्होंने आगे, एक माँ के दो बच्चे बिल्कुल। सेम। माँ के लिए तो दोनों सही है, विधा एक के बिना दूसरे के बिना तो वो रह ही नहीं सकती वैसे। चलो पैरा नंबर 15। Lord Buddha had realized this. He therefore prescribes threefold surrender. Initially, one may be loyal to an individual, but that loyalty should in due course grow into commitment to principles. If this is not immediately possible, it should at least develop into a commitment to Sangha, the community of like-minded persons. Respect for one individual should be replaced by respect for a group of individuals. If there is no love and commitment for the Sangha, there would be decisions and conflicts within it. Loyalty to an individual should thus advance to commitment to the community of the like-minded, and from that to commitment to the principles. बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि. I take refuge in Buddha, I take refuge in Sangha, I take refuge in Dharma. This is the threefold surrender prescribed in Buddhism. Love for an individual, for a group of group for a group is safety. There must eventually be commitment to principles. Then only the institution will be beneficial to the society. Even though the initially source of inspiration is Saguna, the Saguna must ultimately reach fruition in Nirguna. Saguna becomes defective in the absence of Nirguna. Nirguna keeps Saguna balanced and within bounds, at the latter must be thankful for it. Sixteenth para. There is image worship in some form or the other in all the religions, including Hinduism, Islam, and Christianity. Although it is not considered the highest form of worship, it has been accepted and respected as long as it remains within the bounds set by Nirguna. It remains free from defects. As soon as it crosses these bounds, defects appear in it. This has happened in all the religions. Saguna therein has degenerated in the absence of restraint from Nirguna. Animal sacrifice was prevalent in Yagna and other rites in ancient times, and even today animals are sacrificed to goddess Kali. It is a travesty of image worship. It means that image worship has crossed the bounds and has gone astray. This risk is our क्या लिखा मैम? This risk is ये बहुत अच्छा बोला ना कि सगुण प्रैक्टिस करो निर्गुण की लिमिटेशंस के साथ, निर्गुण जो लिमिटेशन लगाता है उसके साथ, और निर्गुण प्रैक्टिस करो सगुण जो लिमिटेशन लगाता है उसके साथ। तो दोनों में ही फिर रिस्क इज अवर्टेड इफ सगुण इज रिस्ट्रेन्ड बाय फर्म कमिटमेंट टू निर्गुणा। सगुण के अंदर ये हो जाता है ना, बहुत ज्यादा रिजिडिटी भी आ जाती है।
टेंशन भी होता है कईयों को, जैसे भगवान को भोग लगाना है तो ये ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, कोई बाहर का आ गया, किसी ने कुछ ऐसा रख दिया, कुछ जूठा उठा हाथ लग गया, तो टेंशन, दैट इज क्रॉसिंग द लिमिट। उस समय ये ध्यान में होना चाहिए कि अल्टीमेटली इट्स ऑल इन द माइंड। तुमने नहीं किया लेकिन किसी से हो गया तो उसमें भी भगवान है, वो देखो ना। हम्म। ऐसे करके अपने आप को उसको शुद्ध कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि उसका टेंशन क्रिएट करना। आई विजिटेड वन फ्रेंड्स हाउस लाइक दैट, तो वो भी यानी वैष्णव, पूरे बहुत ही ज्यादा भक्त और शुद्धि वगैरह वाले, तो उस हर बात के अंदर वो टेंशन दिखता है लेकिन उनका। सो इट वॉजंट कंफर्टेबल सिटिंग इन देयर हाउस इवन फॉर दैट 20 minutes, हाफ एन आवर दैट वी वर देयर। उसके अंदर भी जैसे वो चौकन्नी थी कि भाई यहाँ हाथ नहीं लगा ले, यहाँ नहीं छू ले, यहाँ ये भगवान का ये है, यहाँ हमको अभी ये करना है, अभी इस टाइम पे नहीं, पहले ये करना है। नहीं, और फिर बार बार में फिर ये एक्सप्लेन करना, नहीं हम लोग वैष्णव है ना, हम लोग वैष्णव है ना, हम लोग वैष्णव, मैंने कहा वैष्णव हम भी है, यस। बट इस प्रकार के तुम भगवान के भक्त हो। यदि तुम बाकियों को, सबको तकलीफ दे रहे हो और घर वाले भी परेशान उससे, हम्म। जितना होता है उतना करने का, नहीं होता है तो फिर ठीक है ना, इट्स ओके, होता है ट्राई नहीं यानी करने। मेंटली सब करने का, ये हाँ। ध्यान में रखने का कि तुमने किया, और उसको फिजिकल में जितना ट्रांसलेशन हो सकता है। इसीलिए तो उन्होंने कहा ना कि बॉडीली मॉर्टल बॉडी में रहते हुए संपूर्ण ज्ञान, प्योर ज्ञान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बॉडी की अपनी लिमिटेशंस है, तो वो ही फिजिकल वर्ल्ड की अपनी लिमिटेशंस है। तो जो तुम्हारे वश में है उधर तुम पूरा करो, उधर कॉम्प्रोमाइज मत करो। मेंटली तुमने किया है ना, तुमने समर्पण किया, तो वो ऑलरेडी उसको समर्पित है, कोई उसको बिगाड़ कैसे सकता है? और बिगाड़ने वाले में और कौन? वो उसमें भी तो तुम भगवान का अंश देखो ना, इसलिए वो निर्गुण वाला बहुत जरूरी है। पैरेलल चलते हैं दोनों। हाँ, दोनों को, एक को छोड़ के दूसरा नहीं कर सकते, ये दूसरे का भी साथ लेना ही पड़ेगा। तुम एक रास्ते पे चलो, दूसरे का थोड़ा साथ लो, इस रास्ते पे चलो लेकिन इसका थोड़ा साथ लो, यस। क्योंकि अपन बहुत डिपेंडेंट हैं भौतिक जगत पे। तो भौतिक जगत के साथ में जो भक्ति होगी वो तो सगुण भक्ति ही होगी। अब हम ऐसा सोच लें कि हाँ मैंने खीर बनाई थी रात को, पूर्णिमा की, इतनी सारी मैंने खीर खा ली, पेट भर जाएगा? मेंटली तुम्हारे को लगेगा कि हाँ मैंने खा लिया, लेकिन फिजिकली बोलो तो पेट तभी भरेगा जब तुम एक्चुअली उसको खाओगे। बराबर है। एक जनी मेरे को एक दिन बोल रही थी कि पता नहीं मेरे को आजकल क्या हो गया है, कि दोपहर के अंदर मैं सोई हुई होती हूँ, तो ऐसे सोच के सोई होती हूँ, अच्छा उठ के बाद में अभी धनिया साफ करूंगी, चटनी बनाऊंगी, ये वो सब, लेकिन मैंने मन में क्योंकि सोच लिया, धनिया साफ कर लिया, चटनी भी पीस के रख दी, फिर शाम को जाके फ्रिज में ढूंढती हूँ कि चटनी कहाँ गई। माइंड में किया हुआ ऐसा विश्वास हो जाता है जैसे एक्चुअली कर लिया, अब कहाँ से चटनी खिलाऊं? बनानी पड़ेगी तब होगी। सही तो है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके भी ये बात समझने की है कि निर्गुण और सगुण एक दूसरे के बिना परिपूरक हम्म। नहीं हो सकते। तो मैं तो खाली यही करूंगी, मैं तो खाली वही करूंगी, वो जिद करके जो किया जाता है ना, वो भक्ति ही नहीं है फिर, वो तो स्वार्थ हो गया, वो तो राग हो गया जो तू बोलती हम्म। है। है ना? मतलब मेरा तो ऐसा है कि
जैसे 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 जो होना चाहिए ना वैसे ट्राई करने का। बिल्कुल। अगर नहीं हो रहा है ना तो फिर छोड़ देने का कि भाई हाँ उसके ऊपर हो रहा है, उसके हाँ, उसके ऊपर ही मर्जी छोड़ से देने हो का। रहा है। हाँ बस। तेरी मर्जी। यस, तो क्या, मतलब मैं भी कर, हम लोग भी हैं, हम लोग भी पालते हैं, सब कुछ हाँ, करते हैं। बट अपने हाथ में जितना है उतना, फिर उतना सब कुछ बिल्कुल। तो सब कुछ तो अपने हाथ में नहीं है ना, नहीं तो हम नहीं, भगवान हो जाते थे। हाँ फिर तो हम भगवान हो जाते खुद ही। तो फिर जो नहीं है अपने हाथ में उसको छोड़ दो, बिल्कुल। बस होने दो बाकी फिर उसी के जो होता हवाले है। है। उसी को बोलो कर हाँ ले, मान लेगा। वही तो क्या, इजी हो जाता है फिर, एकदम इजी, मतलब ठंड ऐसा इट इज अन यहाँ से। इजी थिंग। सगुण यस भक्ति यहाँ वैसे भी इजी बोलते हैं ना, हाँ उसमें लेकिन बोला वो ही बट। निर्गुण की सहायता के बिना इजी नहीं है। यस निर्गुण की मतलब सहायता नहीं लोगे तो वो भी डिफिकल्ट हो जाएगी। ऐसा बोझ रहता है, ऐसा सोच लेते हैं ना तो हल्का हो जाता है पूरा। बिल्कुल। क्योंकि तुमने उसके हवाले कर दिया ना, हाँ छोड़ दिया तो उसके ऊपर छोड़ दिया ना। ऐसा मतलब हम लोग में तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि साधन के पीछे भाग के, साधन के पीछे भाग के ना, मतलब वर्ड्स तो आगे मुझे नहीं आता, बट भगवान की कृपा का बल जो रहता है ना वो हम लोग छोड़ देते हैं। बिल्कुल। साधन का उपयोग करो हाँ उसके पीछे एक भागना नहीं है। लिमिट तक, अपने हाँ आप को उस काबिल बनाने के लिए और उस काबिल रहने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये ध्यान रखो कि वो साधन भी तभी काम करेगा जब उसकी दया होगी, और वो साधन तुम्हारे को तभी उपलब्ध कराएगा जब तुम उसको सकारात्मक ढंग से इस्तेमाल करो। ये मेरे को मालूम है। इनफैक्ट योग में भी जब हम उसको पढ़ रही थी, मेरे डॉक्टर जयदेव ने भी एक बार कहा कि यू विल नेवर फाइंड अ तांत्रिक हु हैज अटेन्ड मोक्ष। अच्छा। तांत्रिक विल नेवर हैव अटेन्ड कैवल्य। हाँ, क्यों? क्योंकि वो साधना के अंदर ही, विधि के अंदर, प्रोसीजर्स के हाँ अंदर ही वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड उसको करता है। सिर्फ उसी पे विश्वास है कि मैं ये ऐसा करके ऐसा कर लूंगा, ऐसा करके ऐसा कर लूंगा, ऐसा करके ऐसा कर लूंगा। हाँ, बात सही है, दे ऑल वर्क, लेकिन अल्टीमेटली इट इज वर्किंग बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। वो ध्यान रखो। वो, सही। क्योंकि तांत्रिक उस चीज को नहीं याद रख सकता, उसको अपने तंत्र में इतना ज्यादा विश्वास होता है, हम्म। ओवर कॉन्फिडेंस, फिर वो गड़बड़ हो जाता है। वाह, तेरे को कैसा लगा तेरा याद करके 12वां चैप्टर? श्लोक अच्छा याद आ लगा। रहे थे बीच बीच में? यस ये वही अ, मैं आज ये सुन रही थी ना तभी भी मैं वही रिपीट कर रही थी कि यो में भक्त समप्रिय, ये 20 जो श्लोक है ना उसमें मतलब इसमें ऐसा बताया है कि ये इस भक्त के लक्षण जो है इसमें बताए हैं 20 ये चैप्टर में, और स्थित प्रज्ञ के लक्षण सेकंड चैप्टर में सेकंड बताए हैं। चैप्टर में। ओके सो इसमें ऐसा बोला है कि इसके लक्षण भी हम लोग जैसे कि वो लक्षण पढ़ने चाहिए, हम्म। तो ये लक्षण भी हम लोगों को रोज पढ़ने चाहिए। बट इसमें मुझे ये एक याद है कि यो में भक्त समप्रिय, मतलब मुझे ऐसा भक्त प्रिय है, उसकी डेफिनेशन उन्होंने हर एक श्लोक में दी है। हर एक श्लोक में दी है। वो बिल्कुल। 20 चैप्टर जो है वो 20 लक्षण के हिसाब से, अभी मैं जब भी टाइम मिलेगा तभी वो धीरे धीरे एक एक लक्षण देखूंगी, हम्म। क्योंकि वो स्थित प्रज्ञ के प्रिंट आउट मैंने निकाल के रखे हैं, अभी तक मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया है। ठीक है। बट देखते हैं, इसके लक्षण भी मिलेंगे तो हम्म। देखते हैं क्या है क्या नहीं। अपन इसको तो अभी तो खैर टाइम है थोड़ा, पूरा कर ले। जया राव की बुक है स्थित प्रज्ञ के ऊपर, अच्छा ओके है ठीक है मेरे पास, वो मैंने पढ़ी उसको। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। ये इसके बाद हम लोग वो भी करेंगे। हाँ, बहुत इजी इंग्लिश में है। हम्म। इट इज वेरी नाइस। गुड। अभी करेंगे वैसे इसको। भी 12 12 चैप्टर तो है, और मतलब 6 6 और मंथ बाकी है। जाएंगे कंप्लीट करने के लिए। और करेंगे, पूरा तो करेंगे हाँ ही। अरे सो हाँ हाँ। ब्यूटीफुल।
यस यस इट इज सो ब्यूटीफुल, और साथ में पढ़ने में अलग ही रस आता है। यस यस, अच्छा लगता है, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना। सो ऐसा है। चलो, मिलते नेक्स्ट थर्सडे।